Hi Yashraj. Hi Honey. Hi Nikhil Narwani. Is my voice audible? Like आवाज आ रही है आपको? Hi hi hello guys. बस मेरे को नींद नहीं आ रहा था थोड़ा सा। मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी बातचीत की जाए, बच्चों से हालचाल जाना जाए। बस अब बहुत हो गया। 99 कॉन्ग्रेचुलेशंस, 100 इन इको, 95। अब मैं टॉपर्स लोग से नहीं, अब मैं थोड़े अपने मीडियोकर बच्चों से भी बात करने आया हूँ। 1 सेकंड। हाँ, तो मैं थोड़े से अपने मीडियोकर वाले बच्चों से भी बात करने आया हूँ। मुझे जानना है आप सबका हालचाल कैसा है। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि आई डिड नॉट एड्रेस those students who would be feeling demotivated right now. Maybe, you know, they haven't got the expected results which they were expecting. तो मैंने सोचा चलो आते हैं, बात करते हैं, जानते हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है, आपका हालचाल कैसा है, कैसा नहीं। Oh, congratulations, guys. Congratulations on 98, 90. So I got 67.2. Now, actually, मैंने थोड़ा-सा एक पोएट्री लिखा था, बैठ के मैं लिख रहा था अभी राइट नाउ, तो सोचा चलो आके शेयर कर दूँ कि आपका जैसा भी एग्ज़ाम गया है, जो भी हुआ है, just consider it as a part of life and look ahead to a brighter future is all I know. ठीक है, मार्क्स फॉर दिस मोमेंट देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। ऑब्वियसली यू ऑल वर इंटू दैट फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड आपके अपने एक एक्सपेक्टेशन रहे होंगे, तो अगर वैसा ना मिला हो तो बुरा लगना एकदम जायज़ है। इट्स डूएबल एंड व्हाटएवर यू आर फीलिंग इज़ एब्सोल्यूटली ओके। इट इज़ वैलिड एंड इट इज़ एब्सोल्यूटली ओके द वे यू आर फीलिंग। Whatever marks you've got, whatever, irrespective of बहुत सारे लोग लिख रहे हैं I've got 87, I've got 77, I got this much marks. Is it bad? Is it right? Is it wrong? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? In your opinion, do you find your marks right or wrong? The answer is within you. You yourself are the answer. अगर आपको लगता है कि मेरे को जो मार्क्स आया है, this is not who I am, life is going to throw tremendous opportunities in front of you and you just have to grab them, build on them, build on them, and automatically आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। प्लीज डू नॉट से दैट यू फील लाइक अ डिसग्रेस। एकदम मत बोलिए कि you're a disgrace to the family or I'm a disgrace to myself or I have disgraced my teachers and coaching mentors and whosoever। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने कौन सा बहुत तीर मार दिया था अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैंने कहाँ बहुत ज्यादा तीर मारा था। In class 10 I had got roughly around 86%, in class 12 83%, but I lived my life to the fullest in class 11th and 12th and I have zero regrets about it। मे बी उस मोमेंट में जब बाकी अपने फ्रेंड्स एंड पियर्स का सुना था तो लग रहा था कि अरे यार, मेरे को और आ सकता था। आई कुड हैव। बट टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हेन आई लुक बैक एट माय फ्रेंड्स व्हाट दे आर डूइंग, ऑल दोस टॉपर्स, जितने भी टॉपर्स थे, सच बताऊं, व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट ऑफ लाइफ ना, वो सारे खो गए। कहीं ना कहीं वो खो गए। जिंदगी के इम्तिहान में लोग हार गए।
और जब ज़िंदगी जब इम्तिहान लेता है ना, परीक्षा लेता है ना, तो टेस्ट पेपर कभी भी एक जैसा नहीं होता है, हमेशा अलग-अलग होता है। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। लाइफ इज़ वेरी, वेरी बिग, लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ विल बी देयर, यू नो, सेटबैक्स आएँगे, you will fall back, and once again you will rise from your own failures, and trust me, you will do very, very, very well in life. All that life wants na, honesty, जो आज की दुनिया में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि nowadays the generation is becoming very self-centered and self-obsessed. Even if you have to choose between your comfort zone and your discomfort zone, people will go for the easier path, is all I can say. जब मैं आपको बोर्ड के समय पढ़ा रहा था या मेरा जब बिजी स्केड्यूल चल रहा था, तो ऐसा नहीं कि मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग से कॉल नहीं आता था या वो लोग मेरे को मैनिपुलेट करने का कोशिश नहीं करते, चल ना आर्यन ब्रेक ले लेना, चल ना घूम के आते हैं। आई एम लाइक नो गाइस, आई हैव अ ड्यूटी टू फुलफिल, आई हैव एन ऑब्लिगेशन कि बच्चा लोग शायद मेरा राह देख रहा होगा, तो मैंने वो पाथ चूज किया अपने लिए। दैट वाज माय चॉइस, दैट वाज माय चॉइस। सिमिलरली, जरा सा आंख बंद करके रिफ्लेक्ट करो। अगर आपको लगता है आपको डिजायरेबल मार्क्स नहीं मिला, तो एक बार सोचो, क्या मैंने उतनी ज्यादा मेहनत की थी? एटलीस्ट 6 महीना, 4 महीना पहले पढ़ाई करना शुरू किया था? अगर हाँ, और उसके बाद अगर खराब आया है, देन मेबी चलो उसका सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है। बट अगर आप बोलते हो कि आई स्टार्टेड स्टडीइंग सर जस्ट अ मंथ अगो, और मेबी जस्ट 2-3 डेज़ बिफोर एग्ज़ामिनेशन, जैसा मैं देख रहा था बच्चों का माहौल के 1 दिन पहले किताब खोलने का घमंड है सॉर्ट ऑफ कमेंट्स बच्चे लोग करते हैं। तो फिर वैसे लोग का क्या ही हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। So एक बार just reflect back कि did I put in the amount of hard work? If yes, and if you got your result, congratulations on that. If you did not, next time when another opportunity comes in your life, na, just just don't hold yourself back, is all I want to say. Just put in your best, give in your best shot. Don't get distracted so easily. क्योंकि जिंदगी में कब क्या होगा ना, किसी को कुछ नहीं पता. So I just wanted to share a poetry that I had written, and post that थोड़ा मैं अपने लाइफ के बारे में आपको बताऊँगा, like how my journey has been. Although I don't think so कि उतने ज़्यादा ऑडियंस रेज़ोनेट करेंगे या नहीं करेंगे, I don't know, but still I'll share my life story, like how did I become the founder of Aryan Tutorial and what happened all of a sudden, and I landed up into teaching profession, although which I did not even dream of in my entire life. So सबसे पहले I have written something. The title of my poem is More Than a Mark Sheet. Just one second, I'll close the gate. Just a sec. Yeah, I hope there is no disturbance in the live. So I have written this poem. It is named as More Than a Mark Sheet. So, गौर फरमाइएगा जरा सा. You stare at numbers on a page as if they write your worth, your age, as if a score could dare define the depth of you, the unseen shine. But listen, quietly, beneath the noise, beyond the ranking, beyond the voice, there lives a strength you cannot grade, a fire no failure ever made. You showed up when it wasn't easy, fought through days that felt uneasy. And even now, though doubt feels loud, you're still standing, still unbowed. This isn't where your story ends. It bends, it breaks,
but always mends. For roads that twist in paths unclear often lead somewhere more sincere. One result cannot hold your name, cannot capture your full flame. You are effort, growth, and fight, not just numbers, black on white. So this is what I had written, a little piece that since you're staring at the numbers on that page on the white sheet of paper, and maybe you're trying to measure your worth, your score, and you're trying to just put yourself in that narrative, in that label, that this is who I am. No, bro, no, brother, no, my sisters, you all are much more than that. बहुत आगे है आप लोग इससे, और दुनिया बहुत बड़ा है. Now, to tell you how did I become Aryan Thacker, the founder of Aryan Tutorial, not even scored 90 in my board examination. Still, students are getting so many hundreds and so many 90s from here. How did this journey began? Uh, so after my grade 12th, जब मेरा class 12th complete हो गया था, of course, मैं भी आपके जगह पे खड़ा हुआ था, all anxious and apprehensive with 83%, which college is gonna take me. हमारे टाइम पे तो CUET भी नहीं हुआ करता था, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? पीयर प्रेशर में आके मेरे फ्रेंड्स लोग भुवनेश्वर जा रहे थे, कटक जा रहे थे रादर. देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड श्री श्री यूनिवर्सिटी, एंड चल ना ब्रो, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, मज़ा आएगा, चल, चल, चल. सो पीयर प्रेशर में उठ के चले गए. वहाँ जाके पता चला ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ है, उससे भी ज़्यादा टफ है खाना कॉलेज का. सो 1 महीना तो जैसे-तैसे वहाँ गुज़ारा. ऑलरेडी मैं ककड़ी जैसा हूँ, उस ककड़ी से मैं लिटरली सूखा हुआ गाजर जैसा हो गया था, ठीक है? आई हैड लॉस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 8 टू 10 किलोज़ इन अ मैटर ऑफ मंथ, एंड माय मॉम वीडियो कॉल्ड मी. शी इज़ लाइक, "व्हाट्स रॉन्ग विद यू?" "मम्मा, खाना अच्छा नहीं है यहाँ पे। हमको वापस आना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है।" सो बहुत बहाना करके, "सॉरी मम्मा, नहीं जाना चाहिए था हमको।" रोते-फिरते थोड़ा-सा बहाना मार के, "मम्मी प्लीज़ कुछ करो, मेरे को निकालो यहाँ से।" So I decided to withdraw from that college, Shri Shri University, in a matter of month. Excuse जो हमने दिया था, मेरे पापा को क्या-क्या तो हो गया है, something had happened. कुछ मैंने डिज़ीज़ बना दिया था, it's a fatal disease, and मेरे को जाके दुकान सँभालना है पापा का बुलावा आ रहा है, मेरे को निकाल दो वहाँ से, रोना-धोना मचा के I just withdrew from there. So I came back to Asansol, and I was having a conversation with my sister. I had thought of taking a drop year, that particular year. Okay, drop ले लेता हूँ, and then maybe I'll think for a year what I have to do, and maybe I'll proceed. My sister told me that no, Arif, you cannot take a drop, because if you do take an academic drop, there is a high possibility that you will never return back to your academics. So dropping is not an option. So what is to be done? You want to go for CA, CS or something? I said no. I am dead clear. I am not made for CA, CS. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता था, और I did not have the brains. I just did not want to, and I did not have the heart to lie to my own self. मैं अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलता हूँ. मैं दुनिया भर को झूठ बोलूँगा अगर बोलना होगा तो, लेकिन मैं अपने आप को कभी नहीं बोलूँगा. बट मैं दुनिया भर को भी नहीं बोलता हूँ जल्दी से, इसीलिए मेरे बहुत कम दोस्त हैं, वेरी फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है? आई थिंक 1 या 2, 3, 4, 2 सच्चे दोस्त होंगे, और बाकी सारे तो मौज-मस्ती में आते हैं, सो acquaintances you can say. So, I told my sister I don't want to go for CA and CS, all these professional courses which my friends are opting for, because I'm dead clear कि मेरे को नहीं करना है. तो दीदी ने बोला क्या करना है? एंड मैं थोड़ा ऐसे बड़ा हुआ था कि ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से, "आर्यन, यू आर मेड फॉर अ व्हाइट कॉलर जॉब." व्हाइट कॉलर जॉब? कॉर्पोरेट सेक्टर. "You are made for white collar job. Your English is very polished. You're great at communication. You should go for a corporate field." तो मेरे दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि
ठीक है? ग्रेजुएशन करना है, एमबीए करके व्हाइट कॉलर जॉब में जाना है। दैट इज़ टू बी डन। आर्यन ठक्कर को सोसाइटी ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि आर्यन हैज़ टू गो एंड वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मेरे दिमाग में भी वो चलते रहता था, हाँ, हाँ, जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। बट आई टूक अ पॉज़ एंड आई थॉट फॉर अ मोमेंट आई टोल्ड माय सिस्टर कि सी सब मेरे को बोलता है जॉब करना है, जॉब करना है। माय क्वेश्चन इज़ दैट अगर मैं 3 साल ग्रेजुएशन करूँ, उसके बाद मैं 1 साल मास्टर्स की तैयारी करूँ या मान लो उसी साल मेरे को मिल जाता है, 2 साल मैं मास्टर्स करूँ, I get into corporate and then I realize that I'm not made for corporate after a year because I am that kind of a person who hates comfort zone. I just hate comfort zone. I love when I am uncomfortable. Like I given my best shot when I am in that discomfort wala zone. That is who I am. I cannot be stable at one particular place. Initially, I used to be an eco teacher. उसके बाद I picked up English as well because मेरे को लग रहा था कि इको 8 साल से एक ही चीज़ पढ़ा-पढ़ा के मेरे दिमाग में रटा गया है. I need something more challenging. So I took up English and I proved myself. So कीपिंग दैट थिंग आई टोल्ड माय सिस्टर दैट सुनो मेरे को अभी जॉब करना है। शी इज़ लाइक अभी तुमको कौन जॉब देगा 12th के बाद? ट्रस्ट मी मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। मैंने काम किया है 1 साल कंपनी में। आई वर्क्ड एज़ अ मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव व्हिच इज़ कमिंग वेरी हैंडी नाउ दैट आई नो द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ मार्केटिंग। ठीक है? सो आई एम लाइक नहीं मेरे को अभी जॉब करना है। मैं अपना ज़िंदगी का 5 साल वेस्ट नहीं करूँगा। कमिंग टू अ कंक्लूजन रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट मेड फॉर अ कॉर्पोरेट सेक्टर। सो आई वांट टू वर्क राइट नाउ अलोंग विथ माय स्टडीज़। शी इज़ लाइक फाइन। गो लुक आउट फॉर अ जॉब। आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज इन कैलकटा, अलग-अलग जगह पे जाके वॉक इन इंटरव्यूज एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन एंड ऑल दीज़ प्रोफाइल एंड टच वुड आई गॉट थ्रू the interview at one of the place. The company's name is you can search for it. Inder Sen Shyamlal Private Limited. आप कॉल करके भी पता लगा सकते हो कि आर्यन ठक्कर ने वहाँ काम किया है कि नहीं किया है। तो the doors are still open for me अगर मेरे को वहाँ जाना हो कभी तो। So I worked there as a marketing associate for a year and I learned almost everything about marketing over there, and I wasn't feeling that challenged. At the same time, I got myself enrolled into Bhawanipur College, Calcutta. ठीक है? So हमारा कॉलेज होता था सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एंड उसके बाद पोस्ट 10 आई यूज्ड टू जॉइन ऑफिस 10 से लेके 7 बजे तक ऑफिस करना, घर आना, अपना थोड़ा-सा खाना खाना एंड डोज़ ऑफ। आई वाज़ डेड टायर्ड उस टाइम पे। दैट इज़ हाउ माय लाइफ वाज़ फॉर अ ईयर। मेरे को सैलरी कितना मिलता था 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज़ आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर 12,000 रुपए मैं कमाता था एंड अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज फीस अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज फीस मैंने घर वाले से एक पैसा नहीं लिया है आफ्टर माय ग्रेड 12। उस 12,000 रुपए में से मैं 6,000 रुपए अपना पीजी का रेंट भी भरता था, मैं अपना महीने का खाने-पीने का भी चलाता था एंड थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे तो उससे शॉपिंग भी करता था। क्योंकि मेरे को हमेशा से पापा से पैसा माँगने में बहुत शर्म आता था। आई डोंट नो व्हाई। आई एम अ वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है? अगर आपने मेरा कुछ पैसा लिया है, आई विल डाई एंड आई विल गो इंटो माय ग्रेव बट आई विल नेवर रिमाइंड यू दैट यू ओwe मी समथिंग। लेकिन अगर आपका ₹5 भी मेरे पास होगा तो मैं उसको 500 रिटर्न करके दे दूँगा एंड दैट्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है? सो आई वर्क्ड देयर फॉर अ ईयर एंड आई kept nudging my boss that, "Sir, you're not giving me something challenging. Give me something beyond like whatever you're giving because I want to do something more challenging. I've learned almost everything. अब मेरे को कुछ नया दो। हाँ आर्यन जी देंगे आपको। हाँ आर्यन जी आपको देंगे देंगे। एंड देन 1 साल के बाद when I did everything and by the way I was the youngest employee who was taken to a trade exhibition to Delhi. वो मेरा फर्स्ट फ्लाइट था जो मेरे बॉस ने मुझे बैठाया था और मुझे अभी भी याद है बॉस मेरे को फ्लाइट में पूछ रहे थे कि आर्यन जी डर तो नहीं लग रहा है ना आपको? मैंने बोला नहीं सर आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय फर्स्ट फ्लाइट। So after 1 year, I just put down my papers. I said, "Sir, it's not helping me grow anymore. I think I have learned almost everything. So now I need to go." So sir tried to persuade me a lot because I was very good at marketing. I was very good at communicating. I was very good at handling clients, like how they are to be dealt and communicated with the cost sheet जो cost बनता है उनको समझाना, convince करना कि हमारा price क्यों competitive है, हम लोग क्यों better है बाकी लोग से। So client relationship में मैं काफ़ी expert था and clients मेरे से बहुत खुश भी होते थे, जब मैं बात करता था उनसे जाके, ठीक है? सो आई केम बैक टू आसनसोल। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा था आफ्टर 1 ईयर। हमारा नॉन अटेंडिंग कॉलेज था कि मैं वापस आ गया हूँ
अब मेरे को आदत लग गया 1 साल से 12,000 रुपए कमाने का। अब मैं क्या करूँ? घर आ गया हूँ, ठीक है, बिकॉज़ नो ग्रोथ ओवर देयर सो आई हैड टू कम बैक। तो घर आ गया हूँ, अब पापा से तो पैसा नहीं माँग सकता हूँ। आदत भी लग गया है, महीने के अपने-अपने खुद के कुछ खर्चे होते हैं, सो व्हाट इज़ टू बी डन? मस्ती-मस्ती में, जस्ट हँसी-मज़ाक में ऐसे ही मैंने एक पैम्फलेट बना दिया कि आर्यन ट्यूटोरियल मैं शुरू कर रहा हूँ। आई विल बी टीचिंग फ्रॉम ग्रेड 1th टिल ग्रेड 12th। मेरे पास अभी मेरा पहला पोस्टर है, जिसमें 1 से लेके 12 तक मैं सबको पढ़ाऊँगा। So from grade 1th till grade 6th, all subjects. 7th and 8th, it will be English and Arts group. 9 to 12th, it will be Economics and Commerce. और मुझे अभी भी याद है, वो मेरा पैम्फलेट देख के मेरे पास सिर्फ 6 बच्चे आए थे। कुछ 3-4 बच्चे आस-पड़ोस के थे, जो अभी इस साल 12th दे के निकले हैं फाइनली। दे हैड स्टडीड फ्रॉम मी व्हेन दे वर इन ग्रेड 5th। ओके। सो कुछ आस-पड़ोस के बच्चे आए थे एंड एक बच्ची क्लास 11 की आई थी एंड 3 बच्चे आए थे क्लास 10 के। तो ऐसे करके कुछ हमारा 6-7 बच्चों का ग्रुप शुरू हुआ एंड आई वाज़ अर्निंग सम मेगर ऑफ 6000 पर मंथ, ठीक है? सो आई एम लाइक चलो कुछ तो आ रहा है, ना से कुछ तो सही। सो आई स्टार्टेड लाइक दैट। And then in 2018, the first year itself, like the response of my offline kids, those 6 kids, it was really positive. It was really well. So I started examining the market. Obviously, marketing में काम किया है तो थोड़ा tactics तो पता है कि कहाँ gap है, कैसे समझना है, खुद को position कैसे करना है market में. So what did I do is I analyzed कि what is going on, who all are the tutors in my town and उनके पास जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका रिज़ल्ट्स कैसा आ रहा है। तो मेरे को पता चला कि 2018 में बच्चों बच्चों का मोस्टली रिज़ल्ट्स इको में डामाडोली है। सब गधे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे गधे थे, ठीक है। अब क्या करूँ? उनको तो पकड़ के लाना है। बताना है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और एक 19 साल का टीनेजर के ऊपर कौन बिलीव करेगा दैट ही कैन टीच वेल एंड बिसाइड्स आई एम नॉट अ टॉपर ईदर। आई हैवंट गॉट और 2 साल पहले ही मैंने बोर्ड्स दिया है। सो 2 साल बाद कैसे कोई भरोसा करेगा 88 लाया हुआ बंदा के ऊपर कि वो इको पढ़ा सकता है एंड कॉमर्स में आई हैड गॉट 90s। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ मच इन 90s बट इन 90s तो कौन भरोसा करेगा मेरे ऊपर? तो दैट इज़ हाउ आई एम लाइक कुछ तो करना पड़ेगा। सो हाफ ईयरली के पहले यहाँ पे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आई जुलाई में 2 क्लास 12 के बच्चे मेरे पास पढ़ने आए थे। तो मैंने उनसे थोड़ा बातचीत किया। मैंने पूछा कि अपने बैचमेट्स के बारे में बताओ तो सबका क्या हालत है? तो बोला भैया बहुत बुरा हालत है इको में। तो मैंने थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी लगाया। मैंने बोला 1 मंथ पहले इको का वर्कशॉप लॉन्च करता हूँ। मेरे पास वो वर्कशॉप का भी पोस्टर होगा फेसबुक पे। सो मैं इको का फ्री वर्कशॉप लॉन्च कर रहा हूँ फॉर 25 डेज़, 25 दिन के लिए फ्री वर्कशॉप सबके लिए, नो फीस चार्ज एंड विथ अ गारंटी में। नाउ मेरी फटी पड़ी हुई थी अंदर से बट मैंने बोल दिया कि विथ अ गारंटी कि सबको पास करवा दूँगा, ठीक है? सबको पास करा दूँगा। सो एक दिन एक बच्चा आया। अब इंडिया में तो ऐसा है कि आप फ्री का ज़हर भी दे दोगे तो कोई ज़हर भी खा लेगा। तो ये तो फ्री का पास होने का दावा कर रहा है, नहीं होगा तो 4 गाली दे के चल जाएँगे, राइट? सो एक बच्चा आया एक दिन, ठीक है? उसने पढ़ा, ही इज़ लाइक वॉव! मज़ा आया। वो जाके अगला दिन 2 बकरा को पकड़ के लेके आया अपने साथ। ए चल, ठक्कर फ्री में पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है और बोल रहा है गारंटी के पास करवा देगा। तो 2 आए, ऐसे 3 हो गए, 3 जन को पढ़ाया, वो लोग और 3 को लेके आया। ऐसे करते-करते बाय द लास्ट वीक ऑफ दैट वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप, आई हैड 32 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स हू हैड अटेंडेड माय free workshop and they had given me my assurance that after half yearly they are leaving their teacher, मेरे स्कूल टीचर जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया था और बहुत ही आई डोंट वांट टू से दिस बहुत ही बेकार पढ़ाया था, ठीक है? So they left him and they joined my tuition and from that year Aryan tutorial kick-started with 32 students of class 12 and I was roughly making somewhere around 36,000 in the first year itself. So 12,000, 6,000, 36,000. नेक्स्ट बैच 2019-20 जब आया, आई हैड 62 स्टूडेंट्स क्योंकि उस 32 स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी का मैंने 90 निकलवा दिया था विथ माय डेडिकेशन। मैं लिटरली उनके साथ-साथ बैठ के यू नो
खुद भी पढ़ रहा हूँ, उनको पढ़ा भी रहा हूँ एंड आई एम लर्निंग। अभी जो आप देख रहे हो, इट्स अ वेरी पॉलिश्ड आर्यन। आई वाज़ नॉट नॉट दैट पॉलिश्ड एट दैट टाइम। अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे तो हँसने लग जाओगे देख के कि ये कैसे पढ़ा रहा है, ये कैसे बोल रहा है, ना अच्छा दिखता है, अजीब-सा है, ठीक है, दुबला-पतला-सा है। So that that Aryan. But he started. And next batch, I had 62 students, offline students of class 12. And uske baad, I got somewhere around 150 students. And second year ke baad, I decided I'm not teaching from 1 till class 8 tak main nahi padha raha hu. Now I'll just strictly like professionally I'll be teaching grade 9th till grade 12. And then there was no turning back. Now during COVID time, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे थे, इश्यू चल रहे थे, लव लाइफ की लगी पड़ी हुई थी अपनी। यहाँ पे मम्मी हैड गॉट कार्डियक अरेस्ट एंड पोस्ट दैट विदिन अ ईयर डैड पास्ड अवे। नाउ टू टेल यू समथिंग, आई थैंक माय स्टार्स। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कैलकाटा एंड वर्क, जब मैं जॉब करता था और मैं अपने पीजी वाले लोग को देखता था और अपने बैचमेट्स को देखता था, दे यूज्ड टू गो पार्टी, क्लबिंग, एन्जॉयिंग, डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मस्ती, एंड आई एम टेकिंग माय बैग, going to college and then running down to office, doing my work and then coming back. Sometimes I used to sit and reflect back कि what kind of life am I leading? क्या कर रहा हूँ मैं? जहाँ मेरे दोस्त लोग मस्ती कर रहे हैं, लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नौकरी कर रहा हूँ? But when I lost my dad in 2022 and when I see myself where I stand today at that time as well, मेरे को अभी भी याद है कि मैं डैड को कार के शोरूम लेके गया था एंड पापा की आँख में आँसू था जब मैंने उनके हाथ से उनके बेटे ने गाड़ी दिलवाई थी। वी कम फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली, लाइक वी डू नॉट हैव, अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत एक पुराना सा टिपिकल गुजराती सा जो घर होता है, नॉट समथिंग वेरी फैंसी सॉर्ट ऑफ, ठीक है? So abhi bhi I'm working towards my dream. Although I, by God's grace and by your blessings, I have everything. But still, you want to do something more in life. Maybe मेरा एक सपना है कि एक अपना अच्छा प्यारा सा घर भी हो. And I become a pet parent as well. So when I lost my dad, I realized that thank God I did not choose the same path which my batchmates did. When they in their college life chose to do masti for 3 years, partying, clubbing, dating, relationships, वगैरह, I chose my career over it. And if I hadn't, maybe शायद मैं और मेरी मम्मी रोड पे होते हैं। इफ आई हैड बीन दैट टिपिकल टीनेज बॉय वाला आर्यन, वैसा जैसा होते हैं आजकल के बच्चे। So just because the moral of the story is just because I got 83% in my boards, it did not stop me from getting a job in a company where I went, I worked there for a year and I realized कि मेरे खून में अपना खुद का बिजनेस दौड़ता है। I'm a Gujarati. So since I'm a Gujarati, I've seen my father into business, my entire joint family into business. So I realized after a year that I'm not a corporate material, no matter how hard I try. Of course, I can follow the rules and regulations and protocols and orders and everything, but then मेरे ज़हन में भी इंडिपेंडेंसी दौड़ता है. I have to do something for myself. I was dead clear about it. And what was important to my mind is that since I have seen so much of struggle, there was a time हम लोग जॉइंट फैमिली से है, तो जॉइंट फैमिली वाला टैंट्रम्स जैसा होता है, वैसा ही था हमारे लाइफ में भी। सो देयर वाज़ अ टाइम जब हम ऐसा देखे कि हम मम्मी को बोले, "मम्मी आई वांट अ पेंसिल, अ फैंसी पेंसिल।" मम्मी इज़ लाइक, "बेटा आज मेरे पास अभी पैसा नहीं है।" दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है? जहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर वाले लोग जितना मन करता है उतना पैसा उड़ा रहे हैं। आई एम टेलिंग माय मॉम व्हाई आरंट यू बाइंग साड़ीज़? तुम क्यों नहीं साड़ी खरीद रही हो? तो मम्मी बोलती, "नहीं बेटा मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे को नहीं चाहिए और साड़ी।" सो at that time I grew silent, but I realized that there is a silent battle which my mother and my father, they both are fighting. Although they never put any pressure on me that they expect something out of me, we have raised you, आपको आपको बहुत कुछ करना है, मतलब तुमको मेरे लिए करना पड़े, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। But silently I had seen their struggles and I realized that one thing I'm sure about is that I want to make money. How will I do it? I don't know. I want to make money. I want to see my parents happy.
and want to make them proud. आर्यन ट्यूटोरियल ऑल ऑफ अ सडन बस अलाइन कैसे हो गया, ये मेरे को भी नहीं पता। मैं बस इतना जानता था कि मैं जो भी काम करूँगा, व्हेन आई वर्क्ड इन माय ऑफिस, आई वर्क विद शिद्दत। माय बॉस लव्ड मी लाइक एनीथिंग। एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद आर्यन ट्यूटोरियल, इवन व्हेन आई वाज टीचिंग ग्रेड 1 टिल ग्रेड 12th, छोटे बच्चे भी आते थे, मैं उनको भी उतनी ही शिद्दत से समझाता था और पढ़ाता था जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, कभी भी मेरे को कर्मा आके बैकबाइट नहीं किया है, बट हाँ, देयर वाज़ अ टाइम जहाँ पे करने का कोशिश किया था। आई वाज़ रेडी टू सैबोटाज माय एंटायर करियर व्हिच आई हैड मेड। बहक गया था थोड़ा, अपने गलत रास्ते पे चले गए थे। मेरे को लग रहा था प्यार बहुत कुछ होता है, एवरीथिंग इज़ अबाउट लव, एंड आई वाज़ टोटली इनटू इट, ओवरवेलमिंग फीलिंग अबाउट इट। But then I realized that I have got something really beautiful. I've got a chance to change lives of people, and maybe I should not let this opportunity go. I bounced back. आई थिंक देयर वाज़ अ पॉइंट कि जहाँ मेरे पास ऑफलाइन में एक-एक बैच में 70-70, 80-80 बच्चे आते थे। मैं अपने हरकतों की वजह से एक पॉइंट ऐसा था कि मेरे पास मुश्किल से 40-45 बच्चे आ रहे थे। मार्केट में ऐसा हुआ था कि आर्यन सर अब नहीं पढ़ा रहे, आर्यन सर में वो लश्चर नहीं रहा है, वो शाइन नहीं रहा है, पहले जैसा वो नहीं रहा है पढ़ाने का। तो ठीक है, आई एक्नॉलेज माय मिस्टेक्स, एवरीवन हैज़ देयर डार्क साइड। So I too have my own story, but I bounced back and I made my name. And as I always say, it was because of my last batch that they pushed me to the edge that you have to start online no matter what. We want to see you teaching online as well now. That is why I started YouTube. And as said, I never thought that I'll get so much of love from students like you people. So I just want to tell you one thing, guys, just be honest to yourself now. अभी अगर मैं आपसे पूछूँ आप लोग क्या स्ट्रीम लेने वाले हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा, कोई मेरे से पूछ रहा है कि आपने क्या पढ़ा है? आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम भवानीपुर कॉलेज, कैलकाटा. Post that, I wanted to do masters in economics from London School of Economics, but Calcutta University, being Calcutta University, they give me 57.25% in aggregate. I used to teach here and go and give my examination for the second and the third year. First year तो मैं कैलकाटा में ही था, second and third year में मैं जाके देता था, एग्जाम देता था. सो 2.5% अगर कैलकाटा यूनिवर्सिटी दे देता तो उनका कुछ चला जाता क्या? आई एम नॉट एलिजिबल फॉर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्दो आई हैव मनी टुडे, मेरे पास पैसा है, मैं चाहूँ तो मैं जाके पढ़ सकता हूँ, बट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट. 2.5% से आई नीडेड 60% इन एग्रीगेट. So not recommended. You don't go to Calcutta University if you have good grades. I would advise you, please go to Bangalore, Pune, वहां से पढ़ाई कीजिए, यहाँ से मत करिए, यहाँ नंबर नहीं देता है ये लोग. ठीक है, आपका करियर थोड़ा सा चौपट हो जाएगा सीयू में जाके. So if I ask you about the stream, like most of the commerce people will say I want to go for CA, some will say I want to go for CS. My question is why? क्यों? क्यों आपको CA या CS करना है? एक सेकंड, बड़ी गर्मी लग रही है. हाँ, क्यों आपको CA या CS करना है? CA करना है, CS करना है. My ADHD institution is just with me somewhere. I knew this. You're such an exquisite soul. अच्छा. Thank you so much, Big Brownie. I'm from Kolkata, 99%. अरे हाँ, हाँ, ठीक है, अंडरस्टूड. सर मुझे बता दीजिए अब मुझे क्या करना चाहिए? गॉट 61%. I want to ask each one of you that what do you love to do? What do you love to do? It could be as basic as walking, walking on the road. Gaming. I have my student. His name is, he's in Pune right now. His name is Ayushman. Uh, he studied from me till grade 10th in Asansol, and then he moved to Pune with his mother. And he is a gamer right now, and he's earning pretty well. I see a reflection of me in him. He's making money in lakhs just by gaming. Go for it. Go for it. See, life is yours. I'll tell you one thing. मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पे पेरेंट्स आपको थोड़ा-सा डिक्टेट करने का कोशिश करेंगे कि बेटा आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए. मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगा. आप अपने पेरेंट्स से एक सवाल पूछिए. आप जो मेरे को बोल रहे हैं मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ये आप पे भी अप्लाई होता है.
जब आपका रिलेटिव आपको कोई कुछ बोलता है, खराब बोलता है, तब आपको पलट के जवाब देना चाहिए। यू शुड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड अगेंस्ट देम। डू यू डू दैट? नो यू डोंट। हाउ कैन यू डिक्टेट इट टू मी व्हाट शुड आई डू? आपने अपना जीवन जी लिया, अपने तरीके से जी लिया। हो सकता है you would have been disappointed by your life. This goes for all of your parents, all of your parents. Why should I live my life as per your terms? I'll tell you one thing, guys. There was a time when Aryan used to earn 12,000 rupees, 6,000 rupees, 36,000 rupees, lakh rupees, and today I don't want to openly say how much I earn. By God's grace, it's enough. जिस दिन मैं 12,000 भी कमा रहा था, मैं उतना खुश था। जिस दिन मैं 6,000 कमा रहा था, मैं उतना खुश था। आज मैं अगर लाखों भी कमा रहा हूँ, तो भी मैं उतना ही खुश हूँ। कल अगर मैं वापस से 10,000 भी कमाऊँगा ना, मैं उतना ही खुश रहूँगा। Why, you know? Because whatever I'll be earning or whatever I'll be doing, it will be as per my own terms. मैं अपने लिए कर रहा हूँगा। I have never, ever, ever followed what my parents have told me to do, what my relatives have told me to do. I have always followed my intuition, my heart. There was a time जब मेरे ही घर वाले बोलते थे, जब मैंने स्टार्ट किया था ट्यूशन पढ़ाना, अरे ये तो मास्टर जी है, ट्यूशन टीचर। That is how the reaction used to be, ट्यूशन टीचर। नाउ इसी ट्यूशन टीचर को बहुत सारे लोग फॉलो करना चाह रहे हैं। The day you will have money in your pocket ना, the entire narrative will change. सोसाइटी का पूरा नजरिया बदल जाएगा आपको देखने का। What matters at the end of the day, आपके पास कैसा गाड़ी है, कितना पैसा है, थोड़े अच्छे दिखते होंगे तो चेरी ऑन टॉप। Apart from that, nothing matters in society. I'm being brutally honest. Although I hate this fact कि society is so money oriented and they will never see your struggles. बोलते हैं ना, लोग ने मेरे पैसे तो देखे लेकिन मेरे पैर के छाले नहीं देखे। People have seen my success. Even a lot of my students over here, when they come for my offline classes, especially boys, I see कि boys थोड़ा थोड़ा सा एक jealousy factor आ जाता है, because obviously being a male teacher, I get female attention and I'm very vocal about it. ठीक है, I do get female attention. It is not like I enjoy it. It's like I'm naturally inviting towards women. I feel that women or girls feel a little comfortable around me to speak about their problems, be it family problems, be it relationship problems, or be it any kind of problems. So I have seen this tendency where my students, my offline students, they judge me like, आर्यन सर का तो लाइफ मस्त है, देखो तो पैसा है, लुक्स है, रिस्पेक्ट है, सब उनसे पूछ पूछ के करता है, लड़कियां आगे पीछे घूमती है, और क्या चाहिए? But nobody knows that what kind of struggle I have been through. Nobody sees that countless nights that I have to stay awake preparing for notes, preparing for resources. Nobody sees the amount of hard work that I have to put in while correcting those papers, because when I correct papers, I'm not like ये बच्चे ने मेरे को परेशान किया तो मैं इसका नंबर काटूंगा. I'm like इसने जो लिखा है मैं उसको उतना ही दूंगा. My heart is like that. Nobody sees all of that. बस लोग तुरंत लेबल कर देते हैं, अरे इसके पास तो पैसा है. अरे पैसा आने के बाद तो ज्ञान देना बहुत आसान होता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। I'll tell you one thing, आज मेरे को अगर पैसा छोड़ना भी पड़ेगा ना, मेरे को कोई गिला नहीं है। Because this money thing, after earning that money, this money thing, I've come to realize it can never provide you happiness. That doesn't mean you will not earn. You have to earn. You have to cross those levels which we have. And after crossing that level, today we are saying that even after having so much of money, no, there is no peace of mind in life. If there is no acknowledgement by your own people, if your own peers, they don't respect your time, your energy, your effort, थू है यार ऐसा पैसा को. I often wonder, if I don't have money, a lot of people will part ways with me. They will not standing by my side. And so such a hard and a bitter pill to swallow, but it is what it is. That is how life is. So be dead clear. First of all, I'll tell you how to go for your career. अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि आप करियर कैसे सिलेक्ट करते हैं,
मेरे को क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले आपकी जगह मैं रहूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे क्या नहीं करना है। सीए नहीं करना, सीएस नहीं करना, एमबीए देखा जाएगा, बहुत दूर का है। ग्रेजुएशन हाँ करना है। अच्छा, लोग मेरे को दुनिया वाला हमेशा बोलता है कि "यू आर अ कॉर्पोरेट मटीरियल, कॉर्पोरेट मटीरियल, कॉर्पोरेट मटीरियल, आर्यन यू विल बी सूटेबल फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब।" करके देख लिया, करके देख लिया। 12th के बाद ही करके देख लिया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। नो, आई एम नॉट अ फिट ओवर देयर इन माय ओपिनियन। ड्रॉप्ड इट, एलिमिनेटेड। बेस्ट मेथड इज़ एलिमिनेशन मेथड। सब करके देख लो। Then by chance, all of a sudden, I just बोलते हैं ना, I jinxed with teaching, and then I realized that I had a natural pull towards teaching since childhood. And I was always fascinated by red color pens, and I had a home, like I had a tuition nearby. Just मेरे घर के opposite में ही है वो tuition. There was this auntie where I had studied till grade 6, एंड लोकल टीचर जो बोलते हैं ना, पाड़ाए टीचर, आस पड़ोस के जो टीचर होते हैं, वहां पे भी यू नो शी यूज्ड टू गिव मी द जॉब ऑफ टीचिंग समबडी समथिंग, मे बी थोड़ा सा इसको ग्रामर करा दो, और एक्सप्लेन हिम द स्टोरी। ग्रेड 3 का बच्चा है, 2 का बच्चा है या 4 का बच्चा है। सो आई यूज्ड टू टीच देम विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड enthusiasm and with a lot of zeal. So at that point in time, I did not realize that I wanted to become a teacher. वो तो ऐसे ही है, वही मस्ती मजाक में शुरू कर दिया, एंड देन आई रियलाइज दैट किड्स रेजोनेट विद मी एंड आई टू रेजोनेट विद देम, एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग बिग, एंड देन आई रियलाइज दैट आई वाज ऑलवेज मेंट फॉर माँ सरस्वती. माँ सरस्वती was calling me over, and I did not realize. Maybe uh, that Aryan who started with the intention of going behind Lakshmi, hankering after Lakshmi कि मेरे को पैसा कमाना है. जब सरस्वती का पुकार आया, and I started giving the daan of Saraswati, I started donating Saraswati to students, automatically Lakshmi followed. I never had to chase Lakshmi. Never, never. Until date, never. So this is what I'll tell you guys, that whatever thing you want to do, just do it. Just do it. Don't ask your parents. Don't ask your friends what you're doing. If you like doing something, just do it. No, कैसे अनएक्सपेक्टेड वे में आपका रास्ता खुलेगा, how things will fall into place, and how your ways uh, will get, like how your ways will get open, and how your life will pave a path for you to walk on, you'll never realize it. Just be honest, at least to yourself. When you go to sleep, ask yourself, was my day productive? Did I do something good today? Did I make a person smile at least? मेक श्योर कि आप दिन में एटलीस्ट एक इंसान को तो हँसा दे रहे हो, क्योंकि उनकी हँसी की भी है ना दुआएँ लग जाती है आपको कभी-कभी। इवन अगर आपके जीवन में दुःख दर्द पीड़ा हो, हमारे सबके जीवन में दुःख दर्द पीड़ा है, और हम सबको रोने-धोने का बहुत ज़्यादा आदत है। बट कभी-कभी अपना रोना-धोना हटा के दूसरा का सुन लिया करो। बहुत खुशी मिलेगा आपको भी और सामने वाला को भी। डोंट स्पीक, जस्ट लिसन, एंड मे बी दैट इज़ हाउ यू विल कलेक्ट गुड कर्मा। ठीक है? सर, रीचेकिंग में 5 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है क्या? सी आई विल टेल यू ऑनेस्टली, रीचेकिंग मेरी एक स्टूडेंट ने कराया था, शी हैड गॉट 72 इन इकोनॉमिक्स, एंड आई वाज़ डेड क्लियर कि दैट शी कैन नेवर गेट अ 72 इन इकोनॉमिक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट 3 इयर्स बैक. She went for a revaluation. It's not basically revaluation, it's a retabulation. Retabulation. ठीक है? So after that retabulation, her marks went from 72 to 89 in economics, straight jump. So होता है. अगर आपको डालना है, you can go for it. Definitely. रीचेकिंग में मार्क्स कम भी नहीं, नहीं, रीचेकिंग में मार्क्स कम नहीं होता है। नो, 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 मार्क्स कम नहीं होता है, ठीक है? सर, इज़ देयर एनी ऑप्शन टू जॉइन यू एज़ एन इंटर्न? We are not looking out for interns. In my opinion, we haven't grown that big that we'll look out for interns as of now. So, ठीक है guys, don't feel demotivated. You all will do well and you will shine in your life. Trust me, होगा, होगा, डोंट वरी. अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड मैं आपको एक गोल्डन टिप दूँगा और एक एडवाइस दूँगा
जभी भी कमजोर फील करो, whenever you feel weak, never go to a human being. Where you have to go? See, there is somebody up there. This is a favorite painting which I got from Delhi. It's a baby Krishna and Radha. Wait, I'll show you. You know what fascinated me the most about this painting is that very rarely you get to see Radha holding a बांसुरी and Krishna बैठ के सुन रहे हैं राधा रानी को. So I don't know, just I connected with this painting. It's really nice. It really conveyed something to me, and I just got it. I'm always surrounded by God. Always, always. Almighty is always there beside me. So 1 second, I'll just put it back. Yeah. So I believe whenever you feel weak or lonely, just go to a temple, go to a mandir, and cry your heart out. Don't go to a human being. Don't go to a human being. That's my only advice. Tell the Almighty that this is where I am in life right now. I want to do something good. I don't know how do I do it, but I want to do something good in life. Just help me, God. Please help me. And whenever something good happens, thank to the Almighty that thank you so much for giving me this. And always keep me on the right path. बस इतना ही आप बोलिए, काफी होगा. सर इको में 58 है, इम्प्रूवमेंट डाल दूं? मत डालो बेटा. इन माय ओपिनियन मत डालो. डोंट गो फॉर इट. जस्ट टेक इट एज योर लेसन एंड मूव ऑन. कोई बात नहीं, हो सकता है तुम इको पढ़ा रही होगी किसी यूनिवर्सिटी में. आयुषी यादव 58 आया है. यू नेवर नो. Just get your concepts cleared with Aryan sir, looking at Aryan sir's video, and then start teaching. Start teaching somewhere. ठीक है? Don't go for it. Prepare for the next journey. Take a new leap of faith and begin afresh. ठीक है? Okay, difference between recheck and revaluation is a question. See, recheck and revaluation is the same thing. So there's a difference between revaluation and retabulation. Right now, what is going to happen is a retabulation. So if you apply for a retabulation, जो कि आपका revaluation नाम दिया हुआ है उसका, unfortunately I don't know वो लोग क्यों नहीं differentiate कर रहे हैं. So retabulation में क्या होगा कि आपका papers check नहीं होगा, सिर्फ आपके काउंटिंग एरर्स को देखा जाएगा कि कोई मार्क मिस आउट तो नहीं हो गया काउंट होना. दैट इज रीटैब्युलेशन. So that is the first phase of revaluation. Yes. After that, if your marks does not increase, post that you can go for a rechecking in the second phase where your paper will be taken out and it will be revaluated. So it will be rechecked by a teacher कि उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं. एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ना हो, देन यू कैन गो फॉर अ re-examination which is to be conducted in the month of May. That is how the process goes on of the council. ठीक है? Sir, what's your thought on the society who pressure us to do fast rather than learning from failure? Just shoo that society. Take your own speed, take your own pace. It doesn't matter when you start. My sister, she started open mic at the age of 31 now. उसको प्रेशर आ रहा था शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. शी इज लाइक डन विथ मैरिज, नहीं करना है. सारे के सारे अखंड, समझ जाइए क्या है अखंड, बीप बीप है. And she started open mic. She started writing poetry, open mic, and it has given her a different kind of charisma and confidence altogether at the age of 31. And she's doing well. And she's a very successful HR in City Corp, Bombay. She is AVP now, assistant vice president of the company. Yet she is a budding writer. She started writing recently. So you can start any point of time in life. जब शुरू करना तब शुरू करो. No haste, no hurry, take your time.
सर आपको निन्नी नहीं आ रही, थोड़ी-थोड़ी नहीं आ रही है, इसीलिए तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। सर विल बी नेक्स्ट फिज़िक्स वाला। अरे नहीं, अलग सर बहुत अलग लेवल पे मेहनत किए हैं। कुडोज़ टू हिम। अभी बहुत टाइम है हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए। Sir, I got 99%. Please bless me. Blessings, virtual blessings. You'll do really well in your life. Don't worry. Sir, I want to meet you. I'm from Havda. Then come to Asansol. You can meet me. Sir, which state? West Bengal. दिशिता सो जाओ बेटा। हम जानते हैं आज क्लास कैंसिल हो गया है आप लोगों का ऑफलाइन। सो जाइए जाके लेकिन। हाय कपिल, रे, कांग्रेचुलेशंस। Sir, I don't speak clearly English. Please tell me what do I speak clearly? You mean to say how do you speak clearly the way I'm speaking fluently, right? Just find a friend with whom you can have a conversation. My best friend was a female and she used to give me good banters. Anytime I used to speak incorrect English, she used to correct me in front of 5 people. And out of embarrassment and out of challenging her, that spirit of competition, I polished myself. You have to feel inferiority complex थोड़ा सा automatically improve हो जाएगा ठीक है. I've written a poem. Should I show you? Please definitely go for it. So I got 77 in physics. Should I go for revaluation? You may if you want. देखो मन का तसल्ली अगर करना है डाल दो एकदम डाल दो कोई दिक्कत नहीं है. Go for it. Sir, can I get one-on-one mentorship? Mentorship on what, beta? Sir, can you start teaching CUET? हाथ जोड़ के प्रणाम. Apart from 11th and 12th, I don't have time. I have my offline students as well from 9th till 12th. And besides, this year, Aryan Tutorial is planning to start off with grade 10th as well on YouTube. Although I used to teach here offline, online जाने का time नहीं मिल रहा था because 12 has a hefty amount of syllabus. So this year, I'll start off with 9th and 10th and 11th as well. 87% is really good. Don't worry. You've done really well. I'm proud of you. Thank you so much, Ayushi. Sir got 92 in English. I'm preparing for CLAT. That's why I'm a little bit worried about upcoming boards this year. You have to put in a little bit of extra effort, but CLAT and board simultaneously, huh? You're a great person. Your offline bacha log are quite lucky to have your guidance. Go and ask them, my offline bacha, do they acknowledge me? The problem is that when you have something closer to you, na, you take things for granted. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. आप लोग मेरे पास थे ना तो आपको लग रहा है कि यू नो ऐसा टीचर हमें भी मिल जाता. उनके पास हो तो वो लोग उतना ही मेरा बांस करते हैं ठीक है. लेट देम बी. बट नो ऑल माय किड्स आर रियली स्वीट. आई रियली लव देम अ लॉट irrespective of whatsoever they think about me. That's a human tendency. Japanese or Chinese? Would you rather खेल रहे हैं क्या हम लोग? Thank you भैया. I got 78 85%. Sir, can I start study from your English batch after December? Can I contact you once? Yeah, sure. I would always recommend, please do tell your juniors to go for the full year course. Now, see, it's not about कि I have to make money, that is why. ऐसा कुछ भी नहीं है. But it is because अभी जो ये result आया है ना, अभी जैसे एक या दो को 100 आए हैं, I want majority of them to get 100. 100 भी इंग्लिश में किसको आया है जो पूरा साल पढ़ा है मेरे से. Jagrit Agarwal that you saw today, he had studied the entire year from me, like from 11th till 12th. So his polishing was on a different level. And all those students who got 99 in English, you need a lot of hard work. That is why I recommend कि full year रहने से थोड़ा और टाइम मिल जाता है अच्छे से पढ़ाने का चीजों को.
नहीं तो लास्ट में वही भागा-दौड़ी मचना शुरू हो जाता है। सो डू लेट योर जूनियर्स नो अबाउट मी, ठीक है? Yes, Sujal, now don't क्या बोलते हैं शो ऑफ योर मार्क्स दैट you've got 99 in eco. I know you've got 99. Proud of you. ठीक है? Sujal is my offline student and वो बहुत गाली खाता था मेरे से for not studying and then he's like, "भैया, I've got 99 in eco." I'm like, हाँ, हाँ, ठीक है, चल. When are you expanding to Kolkata? I'll expand through online बेटा. I got 94 today. घर वाले सीए करने के लिए फोर्स कर रहे हैं. I want to go towards cricket और fitness related career. You have to fight for yourself बेटा. अगर घर वाले फोर्स कर रहे हैं, थोड़ा बैठो, उनको बैठ के प्यार से समझाओ कि मेरे को नहीं जाना है जहाँ पे भीड़ जा रहा है. I don't want to go where the entire crowd is going. Already there is a huge chunk of competition over there. Besides आपको पता है सीए-वीए का इवैल्यूएशन कैसे होता है. देखो मैं बाकी लोग की तरह नहीं बोलूँगा कि आपको भाई क्यों नहीं हो सकता है, आपको करना चाहिए. भाई तेरी नहीं इच्छा है तो तू मत कर ना. सिंपल एज़ दैट. Who is asking you to go? See all these people जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं यही करो, सीए करो, सीएस करो, सब अपना फ़ायदा के लिए देख रहा है। उनका लाइफ़ और आप अपना लाइफ़ कंपेयर नहीं कर सकते। आप अपना लाइफ़ को इलॉन मस्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ इलॉन मस्क का स्ट्रगल्स आपका स्ट्रगल नहीं है, आपका स्ट्रगल इलॉन मस्क का स्ट्रगल नहीं है। Simple as that. As I say, when it comes to life, the question paper is different. Circumstances are different. Don't go by what Bheed is doing. If you don't want to go for it, मत करो. Simple as that. ठीक है? सर मेरा सीयूईटी का सेंटर 700 किलोमीटर दूर आया है. God bless your soul बेटा for the amount of distance that you have to travel now. चलो काफ़ी ज्ञान की बातें हो गई. अब मैं जाऊँ, सो जाऊँ. 1 घंटा हो गया है लाइव लेते हुए. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. आई होप माय स्टोरी वाज़ ऑफ हेल्प एंड दिस इज़ आर्यन ठक्कर साइनिंग ऑफ. बाय-बाय. मैं जाता हूँ. कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम कॉलेजेस फॉर बीकॉम ऑनर्स? आई हैव स्कोर्ड 88%. डिपेंड्स कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है. अगर कॉलेज जाना है देन आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर ज़ेवियर्स. बट फिर ज़ेवियर्स का ऐसा है ना, फिर आपका मज़ाक उड़ेगा. कोलकाता में सुबह 2 ही लोग उठते हैं. एक तो सुबह कुत्ते और दूसरे ज़ेवियर्स के बच्चे. Only 2 people wake up in the morning time in Calcutta. One is Xavier student, another are dogs. So if you don't want to go to college, like full-time regular college, and you want to go for non-attending one, then sir, I scored 100 in English because of you. Oh my God, lovely. Chalo, I got my 4th 100 of the day. Congratulations, beta. Yajna Datta. ठीक है तो new towns in Xavier's is not नहीं. Either you go to Park Street, otherwise don't go. Xavier's में मैथ्स लगता है ना? Yes, yes, it's compulsory for Xavier's. Frosty, my number is given in the description below. बेटा you can check from there. And government. अभी मेरे को रात को 12 बजे कॉल मत करना, मैं नहीं उठाऊँगा. सर मेरा मैथ्स नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो यू कैन गो टू उमेश चंद्र. आप जा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको जाना है. उमेश चंद्र. खाली एग्जाम दो और अपना बाकी जो करना है यू कैन डू इट. या उमेश चंद्र जा सकते हैं. हाउ वर योर ऑफलाइन रिजल्ट्स? अमेजिंग. Really, really good. Stupendous results. Like outstanding. फील्डिंग सेट कर दी बच्चों ने. व्हाट अबाउट भवानीपुर? भवानीपुर भी आप जा सकते हैं. आपके पास पैसा है अगर फूकने के लिए तो आप जा सकते हैं भवानीपुर कॉलेज. डेफिनिटली गो फॉर इट. फीस इज ऑन द हायर साइड फॉर भवानीपुर. ओह थैंक यू सो मच दृष्टि गांगुली. सर न्यू टाउन वाला अकाउंट्स लेता है. न्यू टाउन वाला अकाउंट्स मतलब सर भार्गव गांगुली कॉलेज. नो आइडिया अबाउट भार्गव गांगुली कॉलेज बेटा. ऑल दीज गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा. हाँ आप बस खाली एडमिशन ले लो. एग्जाम देने चल जाना जहाँ सेंटर पड़ेगा. दैट्स ऑल. दैट इज हाउ गवर्नमेंट कॉलेजेस वर्क इन कैलकाटा. नो स्टडीज. यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन.
Now, many of you would be thinking, does a good college matter? Yes, it matters. A good college matters when you are going with the purpose of networking. Like if you go to Delhi, Shri Ram College of Commerce, it is not that the college is good. ठीक है, college is good. That's on the other side. देखिए, college life कहीं अच्छा नहीं है. मैं आपको सच बता रहा हूँ. आप elite से elite college चल जाइए. आपको अगर requirement है तो मैं आपको podcast बना के दे दूंगा with my ex-students who are the ex-alumni of Shri Ram College of Commerce and Hansraj and Venkateshwar and St. Xavier's Calcutta. सबका एक ही कहना है, कॉलेज एक जैसा ही है, कॉलेज लाइफ एक जैसा ही है. लोग कॉलेज जाते हैं नेटवर्किंग के लिए, finding the right kind of people. So when you go to SRCC, when you come across like-minded people, like आपके जैसे लोग जितने scholars से आएंगे, they will be future budding entrepreneurs. तो आपको उनके साथ बैठ के उनके सोच विचार के साथ जाने का मौका मिलेगा. That is the only purpose and agenda of college. इसके अलावा और कुछ नहीं है कॉलेज का पर्पस. क्या फ्यूचर में कॉलेज का डिग्री काम आएगा, स्कूल का डिग्री काम आएगा? नहीं, नहीं आएगा. क्या काम आएगा? स्किल्स. इफ यू हैव अ स्किल सेट, you are industry relevant. If you don't, you are not. Simple as that. I have got a lot of collaboration requests from big houses, huh? But I denied. मैंने नहीं accept किया है. I've got collaboration requests from publication houses as well. Your famous publication houses to promote their products or to maybe collaborate with them on something. I did not. I want to keep it for myself. Like I don't want to dilute my quality with them, like associating with them. So what matters is skill. स्किल सेट बहुत मैटर करेगा. अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए. एआई को अच्छे से सीखिए. कम्युनिकेशन अच्छे से सीखिए. कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, हाउ कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली. एंड तीसरा, बी अ गुड स्टोरी टेलर. बी अ गुड स्टोरी टेलर, बिकॉज नो मैटर हाउ मच टेक्नोलॉजी डेवलप्स, ह्यूमन बीइंग रिप्लेस नहीं होंगे. ह्यूमन बीइंग को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सीखना पड़ेगा. स्किल सेट आना बहुत जरूरी है. ठीक है. चलो चलो, इनफ ऑफ ग्रैटिट्यूड. Now my cup of empathy is full. I'm done. Now I'll leave. Have a good night. Shubhratri. Good Nini. Bye bye guys. सबको बहुत जल्द मिलेंगे. अपने जूनियर्स को आर्यन ट्यूटोरियल के बारे में बता दीजिएगा. अब मेरे को नींद आ रही है, तो मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है. ठीक है. So take care. God bless. Lots of love. We'll see you soon. Take care. Bye bye.